Welcome, guys. Welcome to another session of Market Wraps with Mr. Pankaj Pandey, our research head at ICICI Direct. Pankaj, congratulations on 20,200. आपने last time कहा था 19,400 का support है, 19,875 cross होते ही we'll see move towards 20,200 and eventually towards more highs. But हमने new all-time high breach कर लिया है. So your thoughts on Nifty and where is this journey ending, or this is just the beginning? So, hi Gaurav. Overall, a very good week for the markets. Yes, we've crossed lifetime highs, and Nifty is up about 2.5%. Mid cap, small caps have done even better with 3% kind of a gain, and we are clearly outperformed the global markets also. And since we have been consolidating in this range of say 19,000 to 20,200. And this breakout has happened. So our sense is that next level for Nifty would be 21,400. That should come in next 2-3 months. And largely, I think there are a couple of positives which are which is going to sort of help markets. One, the broader market, when you sort of look at, I think the percentage of stocks which have crossed their 50-day EMA, that has sort of increased to 70 odd percent in the month of November. Then globally, things are good because now there is an expectation that the Fed is largely done with rate hikes. Plus, we may see rate cuts going forward in 2024. And on top of it, crude is not going anywhere despite the OPEC commitment. So that's a sort of a macro positive for us. And FIs have started to sort of return to markets. So I think that is another positive. So I think a combination of this should help the market achieve furthermore new highs. So next site in target would be about 21,400 on Nifty. There are two questions यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं आपको. FIS historically low point पे थे 2012 से 16.6% was their total holdings in the market, if I'm not wrong. Historically low level. Second, IT sector has not yet started, and banking has, particularly HDFC Bank. So do you see these two, IT pack and HDFC Bank, and also the FIS taking us ahead? Because December for FIS has been a lull month, क्योंकि छुट्टी पे जाते हैं वो लोग, तो वो एक फैक्टर है यहाँ. So a couple of things, Gaurav. So I think one thing which needs to be highlighted is that ये जो नया high आया है वो retail investor या domestic inflow से largely driven हुआ है. Right. So that's, I think itself is an achievement because without FI money, markets have scaled new high. Now, year end आता है, portfolio rejig होता है, तो obviously there is an expectation that some amount of FI inflows can come towards the end or probably next month. So obviously that is another factor which is going to help the market. And we have seen the large caps, especially BFSI segment, including HDFC Bank, IT as an overall pack. I think they do benefit from higher FI inflows because which is what we are expecting. Absolutely. So ये जो निफ्टी की बात, नीचे सपोर्ट कोई लेवल 18,000 19,800 थोड़ा 400 से ऊपर लेके जा रहे हैं कि कीपिंग इट देयर ओनली? I think support should be kept at 19,800 only. Okay, perfect. So where important event happened yesterday, important data that got released yesterday was the GDP data, and again it has surpassed the expectation. 6.8 was the expectation, but we have clocked above 7% again. So what is your take on this? So I think couple of things here also. One, I think this number is quite good at 7.6% because even RBI was expecting a growth rate of some 6.5%. Yeah. So quite higher than the consensus estimate. And again, I think manufacturing has definitely sort of led with a growth of 14%. Obviously, इसमें कुछ factors हैं, base effect है, plus there is another element of higher capex done by the government. एंड थोड़ा इनपुट कॉस्ट वगैरह भी नीचे है. बाकी जो और सेगमेंट्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट हैं, बेस इफेक्ट का भी है. सो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर 1.2% का ग्रोथ है, सर्विसेज थोड़ा बेस हायर था तो वहां पे करीब 6% का ग्रोथ है. बट ऑल इन ऑल वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स एंड आई थिंक ओवरऑल आवर सेंस इज दैट दिस विल डेफिनेटली warrant a revision in the overall GDP growth estimates for this year and probably for next year. Absolutely. And also the banking credit data also was in line, like in 15.3%. So largely on expected lines, so 15% growth was largely on expected lines. I think some of the highlights of those numbers were, one, I think when you sort of look at retail segment, growth में थोड़ा moderation आया, 18% odd growth, but उसमें कुछ segment है जैसे credit card 28% का growth है,
बाकी और सेगमेंट में थोड़ा मॉडरेशन आया, पर्सनल लोन्स में प्लस इवन इन हाउसिंग। बट आपके जो सर्विसेज सेगमेंट है वहां पे स्टडी ग्रोथ है 20%। तो क्रेडिट ग्रोथ इन जनरल ओवरऑल काफी स्टडी है। एक्सपेक्टेशन भी है कि करीब 14 to 16% काइंड ऑफ अ क्रेडिट ग्रोथ हम्म मेंटेन रहेगी। तो दैट वे आई थिंक ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ परस्पेक्टिव थिंग्स आर गुड। आई थिंक ओनली एंगल व्हाट नीड्स टू बी वॉच्ड इज कि क्योंकि आरबीआई ने रिस्क वेटेजेस बढ़ाए थे, तो प्रॉब्ली सम ऑफ द सेगमेंट्स माइट विटनेस सम बिट ऑफ अ कूल ऑफ, स्पेशली हम्म एनबीएफसीज। हम्म But that needs to be seen. But I think 14 to 16% largely should be the credit growth, which is going to be maintained. So no major worries coming from that front as well. Absolutely. And I think moderation in credit card and personal loan, I think that is what RBI itself wants, because they have increased the risk weights on those set of assets there. तो I think इसमें इतनी घबराने की बात है नहीं. Next question मेरा आएगा, आपका favorite sector. There's no guessing if people are seeing us regularly. Defense. There's a lot of news coming from the defense sector. So what is your take on the spending from the government side and everything? So one expectation, Gaurav, was that government is going to announce some of the projects, but I think the announcement is on a higher side and largely favoring the Air Force. So, for example, when you look at the government has approved acquisition proposals worth 2.23 lakh crores, and जिसमें करीब 97 LCA Tejas Mark 1 and then 156 Prajan helicopters हैं. And then there is the upgrade for Sukhoi, which is also Yeah. happening. I think bulk of the order, which benefits the company, is HAL, so which is already at lifetime high, so 1.6 lakh crore HAL को benefit जाता है. Then overall ancillaries में भी benefit आता है, because एक किसी भी defense equipment में 30 to 40% electronic equipment होता है, तो then Bharat Electronic obviously becomes a beneficiary. I think we have given some call on Bharat Electronics Yes, today. Today, Gladiator pick may we have put BAE. Yes. So, and then I think when we sort of look at some of the other segments, like say Bharat Dynamics, so Bharat Dynamics also should benefit from the anti-ship missile, which they will be sort of supplying to. Then I think then you have other players like say Astra Microwave or Midhani, which are going to sort of benefit. I think one good part is that government is on a blanket basis saying that 50% of the overall procurement has to be indigenous content. So I think so that way I think it's a good step in that direction. I think where we were slightly disappointed is that that 40,000 odd crore aircraft carrier announcement is yet to happen. Probably that might get taken up in next meeting. But एक अच्छी चीज ये हो रही है कि overall Air Force, if you look at, they are sort of consolidating into few aircraft, because earlier Air Force used to operate multiple aircraft. I mean, right from Jaguar to Mirage to multiple kinds of big. So I think that way they are sort of now looking to sort of have largely three aircraft. One is Tejas, then you will have Rafale, then you have Sukhoi. So I think logistically they are sort of going to sort of do a lot more better job, because if you're straddling across multiple aircraft, then obviously maintenance and everything takes a toll. Yeah, I think that's a good move by the government, consolidating with a good base and moving ahead. आज का सबसे important news, I think cement sector में बहुत acquisition news चल रहा है. If I'm not wrong, ITD Cement would be acquired by Ultratech. That was the news today. And one more by, I think, Adani side pay is coming up in one. I don't remember the company name. So cement sector is in news. And what is your take? Because I remember you have suggested Ambuja and Ultratech earlier. So what is your take here? And Sagar Cement, obviously. So we have recommended a lot of cement companies, but coming specific to today's event, so what we have seen is that Ultratech has announced the acquisition of Kesoram Industries. Oh, sorry. Yeah. So no issue. So Kesoram has got a capacity of nearly 11 million tons, largely residing in Karnataka. Now, so this will take Ultratech's capacity to about 149 million tons. And अच्छी चीज ये है कि valuation is quite attractive at 91 million tons. Sorry, $91 per ton. Yeah. And whereas when you sort of look at the replacement cost is at about $130. And what is also good is that since industry is sort of consolidating, so which is why our sense is that a lot of tier 2 players, say be it like JK Lakshmi, Birla Corporation, India Cement, or Orient Cement, so all of them are trading in the range of say $80 to $85 per ton.
And which is why if the industry is consolidating, one, you get better pricing behavior, the overall growth of the industry is a lot more better. And within cement, what we have been liking, or where we are still sort of liking, is one, obviously like you said, एक सागर सीमेंट है जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 305 का है, काफी सस्ते में है, करीब $55 ईवी पर टन पे ट्रेड कर रही है। एंड इसके नंबर्स भी अच्छे थे, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि इसके मार्जिन प्रोफाइल बेटर होगी। देन दूसरी कंपनी जो है जहाँ पे हमें लगता है अभी भी जूस है, वो बिरला कॉर्पोरेशन है। राइट। ये करीब आई थिंक $85 पर टन पे ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 1540। Okay, perfect. We had the auto numbers released थोड़ा late, I think. So what is your take on the auto numbers? And particularly मैं टाटा मोटर्स से पूछना चाहूंगा क्योंकि आप उस पे काफी ज्यादा बुलिश हैं वो साइड। सो कमिंग टू ऑटो नंबर, सी फेस्टिव सीजन के बाद में जो ऑटो नंबर, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो सब में आपको डबल डिजिट डिक्लाइन दिखेगा, राइट। and largely on expected lines, because during festive season what you do is that you load up inventory into the system, and in anticipation of festive season. And post the festive season is over, then obviously you don't produce so much, so आपके जो wholesale numbers जो आज आए हैं, आई थिंक वो सॉफ्टर दिख रहे हैं। बट वाई वाई अगर आप देखेंगे तो लार्जली फ्लैटिश है, सो नॉट मच की टेक अवे आई वुड से फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। आई थिंक देयर आर कपल ऑफ थिंग्स, से फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो के नंबर्स काफी वाई वाई काफी बड़ा ग्रोथ दिखता है, बट वो भी लो बेस था लास्ट ईयर, बिकॉज उनका एक चिप सप्लाई का कुछ इश्यूज चल रहा था। देन एमएनएम के नंबर्स अच्छे हैं, बिकॉज एमएनएम का जो वेटिंग लिस्ट है वो काफी ज्यादा है फॉर द लीडिंग मॉडल्स, एंड कंपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वो अच्छा है। अदरवाइज कुछ खास वैसे आपको नंबर्स में ज्यादा इन्फर करने का नहीं है। आई थिंक एक जो इन्फर कर सकते हैं कि वो फाडा का डेटा बीच में आया था, फाडा के हिसाब से जो फेस्टिव सीजन देखते हैं वो फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि से लेके 15 दिन के बाद का दिन देखते हैं धनतेरस का, वहां पे ग्रोथ काफी अच्छी है, तो करीब 19% की ग्रोथ है। सेगमेंट वाइज में टू व्हीलर में 20% का ग्रोथ है, थ्री व्हीलर में नियरली 40% का ग्रोथ है, आपका पीवी में 10% का ग्रोथ है, एंड ट्रैक्टर्स लार्जली फ्लैट है, बिकॉज ट्रैक्टर्स ऑलरेडी हाई बेस पे है, इवन सीवी का भी ग्रोथ अच्छा है। तो दैट वे आई थिंक ओवरऑल जो एक ट्रेंड निकल के आ रहा है कि आपका फेस्टिव सीजन में सेल्स ग्रोथ अच्छी थी, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपका सेकंड जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स होंगे वो अच्छे आएंगे। एंड एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि रूरल सेगमेंट में जो डिमांड है वो पिकअप होना चालू हो गया, एटलीस्ट दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द टू व्हीलर्स हैव स्टार्टेड टू कंफर्म। Nice. Maybe going ahead more, the auto sector looks good. अगर हम रूरल डिमांड भी बढ़ रहा है तो इट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ दैट ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा करंट है। टाटा मोटर्स में पूछने लगता है, बट रुक जाते हैं। टाटा I'll टेक, come. हाँ टाटा टेक का आईपीओ आया है, बम्पर लिस्टिंग आई थिंक 1300 रुपीज पे, एंड गेन्स वाज सीन। टाटा मोटर क्रॉस 700 नाउ, वेटिंग फॉर योर लेवल ऑफ 810। सो टाटा टेक का आईपीओ के ऊपर कि इफ पीपल हैव already, if people who have got this IPO, should they exit at this level or not? Well, this is one question, because बहुत सारा चीज चल रहा है कि वैल्यूएशन के ऊपर है, 900 इज द एक्चुअल प्राइस जहाँ पे वो आना चाहिए था, एंड टाटा मोटर्स, so दोनों टाटा ग्रुप के ऊपर व्हाट इज योर व्यू? So our overall sense was that 900 is a good level for Tata Technologies from a valuation perspective, but Yeah. obviously it's much more higher than that. So I think one needs to again go back and see the numbers, what kind of growth they'll deliver, and basis that fresh look can be taken. But obviously expectations is ज़्यादा है। बट आई थिंक जहाँ पे कंफर्ट आता है वो टाटा मोटर्स में आता है, बिकॉज देखिए टाटा मोटर्स में जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन या ओवरऑल जो सिचुएशन आ रहा है, एक तो इनको करीब 4,000 का पैसा मिल गया है, प्लस ओवरऑल जो इनका जो स्टेक का वैल्यू है वो बढ़ गया है, तो करीब अब 40 रुपए का इनका टारगेट प्राइस का रिविजन होता है। तो पहले हमारा टाटा मोटर्स में टारगेट प्राइस 810 था, और इसको अगर हम रिवाइज करेंगे तो करीब 850 रुपए हो जाता है। And so that way, Tata Motors के लिए definitely positive है। Tata Technologies, I think, needs a closer look in terms of valuation and the current metrics. 900 was a comfortable level we were sort of looking at, but I think market has been very rewarding, and so that way, I think we would still Tata Motors के through Tata Technology play करना ज़्यादा better लगता है। एब्सोल्युटली, मेरे चेहरे पे अलग स्माइल है, उसका रीजन आपको पता होगा। I can get to that.
Okay, so Pankaj, these were the main news for the weeks. As usual, last section होता है हमारा हिडन जेम, और इस बार का हिडन जेम आप बताइए कौन से सेक्टर से लेके आ रहे हैं आप और कौन सा नाम है? So, company which I would want to recommend is Amara Batteries. So, इसका पुराना नाम था, नया नाम इसका Amara एनर्जी एंड मोबिलिटी है. Okay. सो ये कंपनी एक्साइड के साथ में लेड एसिड बैटरीज प्रोवाइड करती है. इनका करीब जो ओवरऑल जो सेल्स है और 70% ऑटो से है एंड 30% इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है. एंड लास्टली डोमेस्टिक सेल्स 88% होता है, बाकी एक्सपोर्ट से आता है. इस कंपनी की अच्छी चीज ये रही है कि कंपेयर टू एक्साइड, हालांकि एक्साइड इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड एंड वहां पे हमारा कन्विक्शन बाय है. आई थिंक दिस कंपनी आल्सो लुक्स गुड टू अस बिकॉज इस कंपनी का जो मार्जिन्स है कंसिस्टेंटली अगर आप पिछले 8-10 सालों में देखेंगे हैज बीन हायर कंपेयर टू एक्साइड इंडस्ट्रीज बाय 200 बिप्स. तो उसका अगर मार्जिन 13% है तो इसका 15% है. लास्टली बिकॉज इसका आफ्टर मार्केट सेगमेंट बड़ा सेगमेंट है और वहां पे इनको थोड़ा प्राइसिंग पावर मिलता है. और रीजन फॉर लाइकिंग दिस स्टॉक इज वी ऑल नो दैट कि अभी आपके ईवी ट्रेंड बढ़ रहे हैं एंड कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो आई थिंक दिस कंपनी ने भी काफी एग्रेसिव प्लान एक्सपेंशन अनाउंस किया है ऑफ 9,500 crores. So they want to create a capacity of about 16 gigawatt kind of a manufacturing capacity and 5 gigawatt of overall cell manufacturing capacity. So next 10 years में होगा, but even next 2-3 years में I think they are looking at capex of 1,200 crores with the initial 2 gigawatt kind of a capacity. So existing business जो होगा वो एक single digit में grow करता रहेगा. Margin profile वगैरह सब ठीक है, but I think 2026 onwards you'll start seeing the benefits of this capex fructifying. So आपको अभी टॉप लाइन बॉटम लाइन में कोई बहुत ग्रेट ग्रोथ नहीं दिखेगा, बट 26 onwards things will start looking up. Balance sheet wise, we don't see much of concern because ये net cash positive है, plus valuation attractive है, 15 के multiple पे है. And so overall, we feel that this company is also looking to sort of catch up the EV trend by investing into right technologies, and which is why I feel that it can offer an upside of about 27% with a target price of 900. Absolutely. तो one for the future बोल सकते हैं इसे, Amara Batteries. Absolutely. Yeah. Great. So I think this is what our weekly wrap was for this week. There are two questions in the chat. I'll just take it up. One is someone's asking view on HDFC Bank. बहुत extensively हम पूछ ही रहे हैं इसके बारे में, but what is your view here? So I think HDFC Bank, price-wise, we haven't seen much of price performance, largely because valuations are definitely attractive. But see, bade banks ko move karne ke liye you need FI flows. So I think something which is what we would expect we'll get in the next 1 or 2 months. So that way HDFC Bank is very well poised. And जो margin recovery है, because इनका margin profile करीब 4.1 था, करीब I think 3.4 चला गया था. I think अगले 1-2 quarter में आधा तो recoup हो जाएगा, because ये excess liquidity वगैरह पे बैठे हुए थे. अदरवाइज क्रेडिट ग्रोथ वगैरह ठीक है. देन एक और बेनिफिट जो कंपनी को मिल सकता है कि इसका कॉर्पोरेट सेगमेंट थोड़ा बड़ा हो गया. एंड कॉर्पोरेट सेगमेंट अभी आरबीआई का अगर आप मेजर्स देखें तो रिटेल सेगमेंट को थोड़ा स्लो डाउन करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो ओवर हीटेड सेगमेंट है. तो कॉर्पोरेट सेगमेंट का अगर ग्रोथ ज्यादा आता है तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक शुड बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू बाय एट करंट लेवल्स. या Absolutely. And second question is again your favorite stock. I remember you covered on business channels as well. CIE Automotives. CIE, Mahindra CIE as known previously. Your view on that? So Mahindra CI also looks very good to us because एक तो ये कि इसके जैसे जैसे डोमेस्टिक बिजनेस का प्रपोर्शन बढ़ेगा वो अच्छा करता रहेगा, प्लस वहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल बेटर है, प्लस कंपनी जो केपेक्स कर रहा है वो लास्टली डोमेस्टिक साइड में कर रहा है. And so our sense is that even इनका मार्जिन प्रोफाइल ग्लोबल पेरेंट के लेवल पे जाने में थोड़ा टाइम है, तो मार्जिन प्रोफाइल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गो अप. एंड स्टॉक में भी रिसेंट में कोई खास प्राइस परफॉर्मेंस नहीं रहा है. So I would want to believe that this is also a very good stock to be bought at current levels. I don't recollect the target price, but it's been a buy for us. Absolutely. So that's it. That's it from our end for this week. See you guys in next week's market wrap. Hopefully with Nifty scaling around 20,500. ज़्यादा नहीं, 300 point. ज़्यादा नहीं. Okay. Thank you so much, Pankaj sir. Thank you so much. Bye. 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 Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.